माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। अभी हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का पार्टिकल साइज 10⁻³ टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। इसके दो मेजर पार्ट हैं। वन इज कॉल्ड सस्पेंशन। इसका पार्टिकल साइज, सस्पेंशन का पार्टिकल साइज 10⁻³ टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है, जबकि कोलवाइड का पार्टिकल साइज 10⁻⁵ टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। Now we will study what is suspension. So suspension, you might have seen muddy water. Muddy water is a suspension of soil in water. Similarly, milk of magnesia is a suspension of magnesium hydroxide in water. Suspension is a heterogeneous mixture. It is a heterogeneous mixture in which particles do not dissolve but remains suspended throughout the bulk of liquid. Throughout the bulk of liquid is known as suspension. Muddy water. Muddy water is a suspension of soil in water. Milk of magnesia. Milk of magnesia is a suspension. It is a suspension of magnesium hydroxide in water. MgOH(2), magnesium hydroxide in water, is called milk of magnesia. Soil in water is called muddy water. Soil in water. Soil in water is muddy water. Muddy water and milk of magnesia are the suspension. Muddy water is a suspension of soil in water. Now we will see colloid. What is colloid? Colloid is also a heterogeneous mixture. Let us see in detail. Colloid is a heterogeneous mixture. It is a heterogeneous mixture whose particle size is in between the particle size of suspension and true solution. Milk, cream, face cream, vanishing cream, spray, jellies are the some common colloids. Even aerosol is a colloid. Colored gemstone, ruby glass are the colloidal solution. etc.
colloid. What are the properties of colloidal solution and what is the order of size of the particles? Dear students, एक बात आपको यहाँ नोट में याद रखना है कि सस्पेंशन का पार्टिकल सबसे बड़ा होता है, फिर कोलॉइड का होता है और फिर ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल्स होता है। ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल सबसे छोटा, उससे बड़ा कोलॉइड का, उससे भी बड़ा पार्टिकल साइज सस्पेंशन का होता है। सो दिस इज द साइज ऑफ द particles. The size of particles of suspension is quite large. The size of the solute particles decreases in the order. Size of solute decreases in the order. Decreases. इधर size of particles decrease कर रहा है, सबसे छोटा ट्रू सॉल्यूशन का, उससे बड़ा कोलॉइड का, सस्पेंशन का पार्टिकल साइज वह क्वाइट लार्ज होता है। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन? स्मोक, soup polish, shaving cream, face cream, milk, cheese, butter, jelly, blood, starch solution, solution of synthetic detergents, all are the colloidal solution. The physical state of colloidal solution may be solid, liquid or gas. कोलॉइड दो चीज से मिलकर बना होता है, एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम और इसके दोनों के मिलने से कोलॉइड बनता है। कोलॉइड कंटेन्स two components, dispersed phase and dispersion medium. A colloidal solution contains dispersion medium and dispersed phase. The medium in which colloidal particles are dispersed is called dispersion medium. Dispersion medium is always present in large amount. It acts as solvent and the solid-like and the solute-like component is called dispersed phase. ये सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है और यह सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट होते हैं और सॉल्वेंट होता है। उसी तरह से कोलॉइड में दो कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है और डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। डिस्पर्सन मीडियम अगर वाटर हो किसी कोलॉइड का तो उसको एक्वा सॉल बोलेंगे, अगर बेंजीन हो तो बेंजोसॉल, अगर अल्कोहल हो तो इट इज कॉल्ड एल्कोसॉल। I think you have well understood. In smoke, air is present in large amount, whereas colloidal particles of carbon are present in a smaller amount. Therefore, air is the dispersion medium, whereas carbon particles are dispersed phase. Milk is a colloidal solution in which liquid fat is dispersed in water. मिल्क, एक्चुअली मिल्क क्या होता है? लिक्विड फैट इन वाटर is milk. So liquid fat is here dispersed phase and water is dispersion medium. Water serves as solvent here and liquid fat serves as solute. In
gold is the dispersed phase and water is the dispersion medium. In gold, sol, gold is dispersed phase. AU, that is gold, is dispersed phase and water is dispersion medium, that is solvent. अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन. It is heterogeneous in nature. Colloid is heterogeneous in nature. Heterogeneous in nature.